Hello. This is the OnePlus का Pad. Yes, ये just अभी लॉन्च हुआ है, प्री ऑर्डर्स अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दो वेरिएंट में आता है, स्टार्ट्स एट 37,999 एंड ऑल्सो कम्स ऑफ 40,000. दिस इज अ 40,000 वन. Actually, everything you see on this table is OnePlus का फर्स्ट अटेम्प्ट, whether it's the tab, whether it's of course the stylus, या तो उनका ये कीपैड है। ये एक ही कलर में आता है, which is halo green, and that actually has been the theme for OnePlus this year. If I talk about look, body and design, then it's the first tab with a 7:5 ratio. The reason why OnePlus has done this is because उनका मानना ये है कि a square is really nice in terms of holding it, viewing it और read करने में भी आपका जो experience है ये काफी अच्छा experience है। Honestly speaking, I mean prolonged use में शायद मुझे पता आएगा, but yes, viewing pleasure के हिसाब से वेबसाइट और ये सब आप जब भी सर्व करेंगे, then definitely I can find some truth to that. Now, if I talk about the design, I mean it's really sleek. Look at this, it's like super sleek, and look at that texture. I just love this texture. Do you see that texture? It's really beautiful. तो ये है पैड, ये है कीपैड और ये है स्टाइलो। पहले मैं अटैच कर देता हूँ and then we can quickly just talk about the specs. ये लग गया, this is got attached and yep. So दो वेरिएंट में ऑफ कोर्स ये आता है। पहला है 8 GB रैम विद 128 GB कैपेसिटी। ये वाला जो है दैट इज फॉर 12 GB रैम एंड 256 GB कैपेसिटी। सो दैट्स द टॉप एंड वेरिएंट दैट वी हैव। अभी प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो ये आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर के साथ। ऑफ कोर्स आई नो आप सोच रहे हैं व्हाई नॉट स्नैपड्रैगन, मेरे दिमाग में भी ये आया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग it's really fast. I've been using it quite a lot, and whatever I do with it, whether I'm doing multitasking, whether I'm opening like number of apps, whether I'm browsing, whatever I do, it actually is like really fast. डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 11.6 इंच का डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। It's really lucid, smooth, quite nice in that respect as well. 500 nits का डिस्प्ले है। पीक ब्राइटनेस जो है which is quite good because जो iPad भी है that also peaks at around that similar sort of brightness. It comes with 9510 mAh battery. So the battery life actually is supposed to be pretty good. Standby time जो है इसका बोलते हैं 1 month है। Honestly, I don't really know 1 month है, बट मैं इसको prolonged use में definitely आपको बताऊंगा कि 1 month का स्टैंड बाय टाइम है कि नहीं। बट चार्जिंग ऑल्सो कम्स विद 67 वॉट सुपर वूक चार्जर जो डिसेंट स्पीड में चार्ज करता है। हीट इतना ज्यादा नहीं होता है बीच बीच में, कभी कभी व्हेन यू आर डूइंग वेरी हाई इंटेंसिटी। नाउ आल्सो एक्चुअली व्हेन आई एम डूइंग स्टफ इट्स नॉट रियली हीटिंग अप। अगर कैमरास के बारे में बात करें जो ऑब्वियसली टैबलेट्स में आप यूज करते कि नहीं आई डोंट नो, बट एट द बैक देयर इज अ 13 मेगापिक्सल कैमरा एंड द फ्रंट यू ऑब्वियसली हैव अ 8 मेगापिक्सल कैमरा। वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये 13 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो सेंटर कैमरा है, को बेटर सिमेट्री देता है because there are a lot of tabs that you use. Actually, personally, I use an iPad mini as well a lot, which has a camera a little bit on the side. So कभी-कभी आपको सेंटर में उसको हिला के रखना पड़ता है. But as you can see, this is like right at the center. So speakers भी जो है ये आता है with Dolby Atmos and Dolby Vision. 4 immersive speakers है जो basically इसके दोनों sides पे हैं. Let's check the sound actually. बातें तो बहुत होती रहेगी, but let's see what it is. Hi, and welcome to Asian Photography. Quite My loud, name is Bhagat Desai, and today is all about the OnePlus के टैब के रिव्यू या फिर अनबॉक्सिंग में OnePlus का वीडियो। यस, साउंड इज एक्चुअली क्वाइट गुड, इट्स रियली पावरफुल। मींस कि जब भी आप कोई कंटेंट भी देख रहे हो नेटफ्लिक्स, प्राइम, एनी टाइम और इवन ऑन यूट्यूब एक्चुअली, देन यू विल रियली गेट सम नाइस क्रिस्प साउंड एज वेल। सो यूजर इंटरफेस के बारे में जो बात करूं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से जब भी आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, स्पेशली अ टैबलेट बिकॉज ऑफ इट्स रियल एस्टेट बिगर स्क्रीन. So honestly, there's some things which I really like. For example, there's something called split screen, which is really good. अगर आप दो फिंगर लेके इसके सेंटर में से उसे स्वाइप करेंगे, so it splits into two windows, which is very nice, and then you can actually resize the window the way you want. Which is really easy. The animations as well actually are really good. Like if you see a lot of times when you open something and when you send it back, so it actually falls back into place, which is quite nice to see. I really like that as well. और ये है OnePlus का स्टाइलो। Of course ये आता है ₹4,999 का, and ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है OnePlus को, the tab or the pad as you call it. So quite easy, quite useful. 2 मिलीसेकेंड का डिले है इसमें, विच इज क्वाइट नाइस. इट्स एक्चुअली रियली गुड, वेरी यूजफुल, रिस्पॉन्सिव है, क्वाइट इजी टू यूज. मैं इसे काफी यूज कर रहा हूँ ऑनेस्टली, जितनी बार मैंने इसे अभी तक यूज किया है, इट्स क्वाइट यूजफुल. आई फाइंड इट प्रीटी इजी टू राइट समथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू.
सो उस हिसाब से इट्स क्वाइट नाइस. बट एक बात मैं आपको कह दूं कि देयर इज अ राइट एंड रॉन्ग वे टू डू दिस ऑनेस्टली, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट कम्स इन द लिटरेचर जिसमें आपको ये बता पाएगा कि कैसे फिट होता है. तो ऑफकोर्स मैंने भी ट्रायल और एरर में इसे हेल्प किया है. सो जैसे देखेंगे आप, ये सब जगह एक्चुअली मैग्नेट्स है. wherever you fit it will actually touch. बट ऑनेस्टली यहाँ पे ऊपर एक जगह दी है इसके मैग्नेट की, इसे आप, एंड यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है. तो ये फ्लैट सरफेस जिस पे इन्होंने वन प्लस लिखा है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टैप इट एंड दैट्स हाउ इट गेट्स डिस्टिंग. और जब ये लग जाता है तो देन यू कैन सी इट्स एक्चुअली रियली टाइट. द मैग्नेट्स, कैन यू हियर दिस, द मैग्नेट्स आर एक्चुअली क्वाइट टाइट. अदरवाइज दूसरे जगह लगेगा तो ये चिपक तो जाएगा, लेकिन ये इट बी लाइक फ्लिम्जी. सो दैट्स हाउ यू अटैच द टाइलो टू दिस थिंग. ये मैग्नेट सिर्फ ऊपर ही नहीं, इसके पीछे भी कहाँ पे मैग्नेट है, मैंने अभी जस्ट देखा. लुक एट दैट. ओके, वेयर इज इट? ये बिना कवर के शायद यूज करे उसके वजह से है क्या? आई डोंट थिंक सो, बट एनीवेज दैट्स समथिंग न्यू दैट आई फाउंड. तो ये स्टाइलो जो है ये एक्चुअली आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स भी देता है. फॉर एग्जाम्पल टू स्विच बिटवीन द लास्ट यूज टूल्स, डबल टैप टू यूज फीचर्स लाइक इरेज. अगर आप फिंगर का कॉम्बिनेशन प्लस ये टैप का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, सो आई हैव एक्चुअली बीन यूजिंग इट टू लीव सम इंस्ट्रक्शंस टू माय टीम on some specific tasks and things like that which I want them to do. Okay, let's also talk about the keyboard. So ये keyboard जो है ये actually आता है price of rupees 7,999. Honestly, again halo green color में, it's quite nice, feels premium, magnets everywhere, of course magnet over here. और जब भी आप इसे खोलेंगे तो obviously you have the keyboard on this side. 3 पिन का कनेक्टर है naturally, जैसे normally tabs में होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी देखा है, it actually connects really well. Typing position se also I find it really easy to type, and whatever I've actually been doing, it's quite easy, quite convenient. But depend करता है आप कैसे covers भी इसमें use करते हैं. For me personally, actually I don't really use the keypad a lot. I prefer using the touch screen and the hands. So उसके वजह से मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि when you fold, especially like something that I find a little funny, like I have a habit of viewing my iPad sometimes like this, holding the cover, तो then ये keypad जो है ये पीछे मुझे लग जाता है. Feel wise, use wise, I would say that it actually is quite premium, quite nice. लाइट नहीं है, ऑफ कोर्स ये कीपैड फंक्शनल है, लेटेंसी इज वेरी लेस. द मोमेंट यू कनेक्ट, इट कनेक्ट्स एंड इमीडिएटली यू स्टार्ट फायरिंग एंड यूजिंग इट. ट्रैक पैड जो है मतलब एज इन फॉर अ ट्रैक पैड ऑफ दिस साइज आई थिंक इज क्वाइट नाइस. नो इश्यूज एज सच, कंफर्टेबल टू यूज. आई हैव गॉट फैटर फिंगर्स, तो थोड़े मोटे फिंगर्स के लिए भी फिर भी इट्स क्वाइट गुड टू यूज, ईजी in terms of the area as well. So but एक बात आपको ये भी नोटिस करनी पड़ेगी कि this only comes with Wi-Fi only. And OnePlus का ये मानना है the reason is because they are providing like a seamless synergy between their ecosystem. So उसके वजह से you don't really require a SIM card. And I kind of agree with them because मैं खुद भी actually मेरे iPads जो भी हैं या any tablet that I've used in the past as well, I've never really had any SIM card in it or even an eSIM for that matter. Plus अगर आप ecosystem में है, for example अगर OnePlus के, so then the seamless connection is really easy. Like I use the OnePlus Buds Pro 2 quite a lot, so वो seamless synergy भी इसमें ये pop होगी, so which is quite good. And these are good functions to have, and that's why they're working on that ecosystem. So what are my first impressions of the OnePlus Pad? Honestly, ये market जो है ये काफी interesting और heat up हो रहा है. Of course, you have your regulars like your Apples, your Samsungs, and you have your Googles, and naturally you have your Vivos and Xiaomis and all of these as well. But इसमें अभी एक OnePlus भी enter हो गया है, and with a nice formidable product for a price which starts at 38,000, और वो price पे आपको 8GB with 128GB capacity मिल रहा है. ये of course 12GB है with 256GB capacity. It's quite fast, quite sleek, feels really nice and premium. But yes, ये keypad के साथ, which is for about 8,000, and this stylo of course that you have, it'll be about 5,000, so that total package is about 50,000. I'm not really sure कि आपको ये चाहिए या हर एक चीज इसमें से चाहिए रहेगी नहीं, but as a pad per se, I really think it's a good product. Impressive, sleek, fast, nice user interface, feels good in the hand, feels solid, so that's a pretty good attempt. स्टे ट्यून फॉर द होल रिव्यू. बहुत ही जल्दी हम इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कुछ उसमें स्पेशली देखना है, एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू वांट टू सी आउट ऑफ दिस. लुक अस अप ऑन इंस्टाग्राम, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए बिकॉज बहुत ही बिजी वीक है. वी आर एक्चुअली गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस व्हिच आर गोइंग टू फीचर वेरी सून. सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी